नहीं, that is university. So that is what I wanted, and that's why. खुश रहो यार. और ये बहुत जरूरी है. You must have that as a student. You are very young. और उन्होंने स्टूडेंट की एक बात बताई. So there was a convocation at 1.5 hours. लेकिन उन्होंने जो 7 बातें उन्होंने कहा कि देखो स्टूडेंट में 7 अक्षर होते हैं, STUDENT, and that 7 alphabets must give all the time the inspiration for you. And to have that inspiration, you have actually come to the August institution of RVG Educational Foundation. You have come with a purpose here. पर्पस से आयो ना, इतनी दूर से अपने घर को छोड़ करके, माँ बाप को छोड़ करके. So you have come for a purpose. क्या पर्पस? What is that purpose? पर्पस ये to shape your life. स्टूडेंट का जो पहला अक्षर है क्या है? किसको? Your life. ये ध्यान में आ गया? इसीलिए हमारा जो इन्वोकेशन सॉन्ग है इसी तरीके से. दूर अज्ञान के हों अंधेरे. जब अज्ञान का अंधेरा दूर होगा, सीए का सिलेबस ठीक ढंग से तुम्हें जानकारी होगी, then you will be able to shape your life. तो ध्यान में आया. For the purpose of the induction program, here we have just introducing ourselves. You are introducing yourself to us, and that I want to remind you. I want to tell you that you have come here as a student, and the first alphabet of the student is S, and that as denotes and gives you that you have come here, that purpose is shaping your life as a better country citizen of this country. ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये आप करेंगे ना? You will do it or not? Say yes. Yes, sir. Shaping your life, student का पहला. Then शेपिंग, देखो हम पैदा हुए हैं और जितनी जिंदगी है वो बिल्कुल निश्चित है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, कोई वेवरिंग नहीं है. What is required? That time which has given to us, you have to manage. So T says time management. I am very happy to see all of you when we have given you the time of 10:45. And you all people have come at 10:30. Clap for yourself. It's amazing. It is good. Manage the time. The time management is the second most important thing. 1 second ये समय गया, 10 बज करके अगर 50 मिनट चले गए, it will not come back. In anybody's life. अभी वापस आने वाला नहीं. So what do you have to manage? You have come for a purpose to shape your life, and that shaping of your life depends upon how you manage your time. You utilize your time for a purpose up to the extent which you can do. So T समझ में आ गए? S, T, और फिर क्या है? What purpose? How can you shape your life? So you have to enhance your understanding when you have come to this institution. You understanding. अपने जीवन का जो विस्तार है, अंडरस्टैंडिंग, सोचने का, समझने का, जानने का. श्री मनोज जी has come. So you have come for a purpose, and that is the understanding. You have to enhance your understanding, not only in the syllabus, but also in other area of your life. तुम्हारी understanding बढ़नी चाहिए. How you have to behave
how you have to learn the things, what is going on in the society, how it is changing so fast. So that the third element of the purpose, that is the understanding of the things which is going on. And when you have enhanced all your things, so you dedicate yourself. That is the with discipline. So when they understand, when you have come for a purpose, and then the time has that with discipline, it is required. That elegance is required. आपका इंडक्शन इसलिए हुआ है. You are being here. You have been inducted. You are being inducted as a student of this august institution, and that सादे सरल रहो, be natural. In that particular, you have learned so many things. You are very much wise person. You have attributed everything, but then it comes to the ego. That ego should not be there. You be natural. आप कैसे रहो? Natural. जो अपना स्वभाव है उसके हिसाब से रहना चाहिए. Be natural. And then become the trustworthy of the institution, to the nation, society, and to your family. समझ में आ गया स्टूडेंट क्या है? अब आप कौन से स्टूडेंट हो? You are the CA student, right? CA का क्या मतलब होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट. चलो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो ये तो डिग्री हो गई, लेकिन फिर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे कैसे? With your commitment and attitude. That commitment and that attitude will make you what? The successful chartered accountant, and this temple of learning will shape your life if you people, those who are being inducted in this as a student in this residential learning institute, if you follow the rules, and now the some wisdom of words will be given of the students committee, Shri Manoj ji, and also Kamal ji. So I would like to Kamal ji. Kamal ji से शुरू करते हैं. First of all, Kamal ji is trustee and also the managing committee members. Vice President. So I would request Kamal ji to speak a few words. सभी लोगों को नमस्कार. मुझे जब भी कभी सबसे पहले एक ही बात बोलता हूँ कि भाई बी ऑनेस्ट इवन इफ अदर्स आर नॉट. बी ऑनेस्ट इवन अदर्स विल नॉट, एंड बी ऑनेस्ट इवन अदर्स विल नॉट और अदर विल कैन नॉट. आपको ईमानदार बनना है. आपका प्रोफेशन आगे जाके आपको ईमानदारी के लिए आपकी ओर देखेगा. उस टाइम पे आपके पास में दो रास्ते होंगे. एक बार सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरे पास में दो रास्ते थे. मैं करप्शन करता और मेरी पूरी फैमिली को फॉर्ब्स की लिस्ट में टॉप 10 में ले आता, और दूसरा था कि मैं मतलब करप्शन नहीं करता. तो बोला कि मैंने दूसरा चूज किया और मैंने मेरी जनता को और कैपेबल और रिच बनाया. तो आपको भी यही करना है. आपके पास में बहुत से ऑफर आएंगे बेईमानी करने के या कुछ भी. ईमानदारी आपको हमेशा काम लगेगी. ये आपके प्रोफेशन का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट और सबसे बड़ी जरूरत है. थैंक यू. धन्यवाद. Now I will request Shri Vinod ji
to address you. Good morning, friends. Generally, our induction program will conduct when you enter in the hostel, but somehow this time it is 1 month or 2 months delayed. The induction means you know the things about the hostel, what the activities is here are going on, what is the culture, what is the how you have to behave in the hostel. The main intention of the induction. So now most of the students know the atmosphere because you are already here from last 1 month or 2 months about this. My sincere request to all of you that you should be follow the hostel rules, regulations and behave a good student. So we can also proud on you. That is only my request to all of you. Thank you very much. अब मैं हमारा जो एक स्टूडेंट कमेटी है, उस स्टूडेंट कमेटी बहुत सारे प्रोग्राम करती है. It holds so many programs, educational, cultural, other programs also, and that is being headed by Shri Manoj Sigarodia. He is also a member of the entire Educational Foundation, the managing committee, and also heads the student committee. आप सब लोग उसमें शामिल होते हैं. And now we will give you some programs. We will always give you the entire programming of how we actually learn the things in this institution. ये बात ठीक है कि ये हॉस्टल है, लेकिन हॉस्टल के बावजूद भी आप यहाँ पर आकर के किस तरीके से उन प्रोग्राम्स के द्वारा अपनी जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है, आपकी जो इंटीग्रिटी है, आपकी जो दूसरी और फिजिकल कैपेबिलिटी है, everything how it has been enhanced. That program that which is given by Shri Manoj, I request him that he will address you. Good morning. I was also a student of this hostel in 86-89. And we were partner in the one year. And we are now partner in real science also, more than partner in real science, in business also. So here, this is not only accommodations, this gives you a human being, good citizen of India, and how can you contribute better way in your personal life, in your social life, giving back to the institutions also. So you will learn all these things during these 3 years. 2-3 things I would like to share with you. The one thing is hard working. CA requires hard working. If you simply complete your articleship for 3 years, then people will tell you you have experience of 3 years. Multiply by 8 hours in a day. If you work hard, work more, work 12 hours, then your experience multiply by 1.5 times. So same way in life, in initial period, one should work very hard, very hard, very hard. Your experience will be multiplied by that way. Second thing, RVG is connecting the peoples. You are connected here now, and if you wish, you can continue your journey very long after becoming chartered accountant, after becoming successful practitioners, or in your life, professional life. So now RVG, you should think while coming to RVG, how to give back to the society, how to give back your institutions back when you become something.
that you should learn from this. So you here there is a very good culture of connecting people. We have RVG, we have RVG alumni. After becoming chartered accountant, after completion of your Article 6 postal life, you will be the alumni member. Through alumni members, you can connect yourself with other students, with institute. So always have in a mind that we will have some connections with RVG after that also. Third thing, as a RVG student affairs committee, we conduct so many programs in RVG that is mainly related to educational and cultural, two sides. So you become member of that committee, participate in that committee and enhance your skills. That is my request. So your participation will increase, your skill set will increase, the active participation for the benefit of yourself and for the benefit of others. Thank you. हम लोग जो है ना स्टूडेंट कमेटी periodically we take the meetings of the students also and take their feedback for which program will benefit you more, and that is true in the intellectual form, in the discussion form and everything. आपने क्योंकि आपको आए हुए 1 महीना भी होगा तो you must have joined the coffee with RVG alumni. कितने लोगों ने ज्वाइन किया था जरा हाथ उठाओ. How many of you? Only 146. Why others have not joined? पता था कि नहीं पता था? पता था, लेकिन क्यों ज्वाइन करें ऐसा? ज्वाइन करो. You will find something new, and that will enhance your knowledge also. That will enhance your experience. For this purpose you have come from Rajasthan. Now my Mr. President is here. I have told you the first letter of the student is S, shaping of your life. How can you shape your life? And today you have been here in Mumbai, staying here, but doing articleship. How you can be a good article, effective article, influential article. एक तो बात ये बताएंगे, and then how can you be a good chartered accountant, and how can you be a successful chartered accountant? That secret of success to shape your life as a wonderful chartered accountant will be given, because he is a wonderful also. He has shaped his life from a very humble family, from a gaon, remote village, and he has risen to this particular level. Sunil ji, Manoj ji, they are from a very humble background. बहुत छोटे से गांव के लोग. आपके पास आप सब लोग आए हैं, सबके पास 5-5, 6-6, 7-7 जोड़ी चप्पल है. मैंने देखा 25-30 जोड़ी जो है आपके पास कपड़े हैं. ये सब लोग जब आए थे तो 2-3 जोड़ी कपड़े लेकर के आए थे, और पैरों में चप्पल, सैंडल ऐसी. From there, from that earth, they have risen to this state. Today they are able to, they are giving back to the society, shaping your life. You can also take the baton from them. I would request the respected President of Shri RVG Educational Foundation, give him a big applause. Thank you, sir. My colleague and elder brother in the RVG committee and our trustee, Sri Kamalveer Jaspuria. This building where we are sitting was originally founded and funded by his forefathers. And and not only that, the journey continues even today. Their 4 family members are very actively engaged for the welfare of this organization. Thank you so much.
Sri Vinodji Sir, our Honorary Secretary. Vinodji himself is not a chartered accountant, but you would be happy to know that his 4 family members, except his wife, 2 sons and 2 daughter-in-laws, all 4 are chartered accountants. Manoj, my buddy, my friend, my partner, my brother, is part of a very distinguished organization and heading the students committee. Sri Vedaji Agnik, the person who has taught us the way of life. He has very high influence, not only you and the students, but many of us. And I am really greatly indebted to him for his continued service to this august organization. Sir, thank you for your my colleagues in the administration, Sri Sunil Deora ji, Sri Sharma ji, Aditya, madam, and very, very dear students. A very good morning to all of you. Good. How are you? Good. You had your breakfast today or not? Yes, sir. It was good? Thank you. So first of all, let me congratulate you for choosing this profession. The profession of chartered accountancy is very unique. And I would always say that it's the only profession where somebody pays for the services and somebody believes and trusts on the work done by us. It's a very, very rare profession. An advocate would be believed and trusted by the client who pays. A doctor, he always works for the client with the patient who pays him. But it is the only this profession where a client pays and the society believes, the government believes, the stakeholders believe, the investors believe, who have never seen your human face and they are never that level of understanding. The course of chartered accountancy is the cheapest course on the earth and it's the most remunerative. If you compare the ROI, because I was talking to my son who is studying in the US, always calculate the ROI. This is my cost of study and how many years it will take me to recover. And then I tell him, यार तू तो 5-6 साल लगेगा रिकवर करने में कोस्ट को. हमारे यहाँ बच्चे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनकी तो कोई कोस्ट भी नहीं है तो भी 3 महीने की रिकवरी पीरियड हमारे लिए. So the payback of our profession is not years, it is months, isn't it? Yes, sir. क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट तो कुछ है ही नहीं यार. You get good stipend and hardly there is a cost. And those who come from a humble background, here is RVG, the philanthropist of our organization. They are ready to fund your requirements, supplement your efforts. And therefore, this is the course which is for the reasons that it hardly had any cost, and you command a very high respect in the society, and as I mentioned to you that you are trusted in the most respected manner. I think that's the uniqueness of this course, and I'm very, very happy that you are also part of RVG. As Manoj mentioned, I was also a student of this August organization. तभी एक ही बिल्डिंग हुआ करती थी, हम लोग 4th floor पे थे. And believe me, the impact and the resources this organization has given to me, I don't think that can be compared with anything else. And therefore, I once again congratulate to you having entered in RVG. So clap for yourself.
दफा आ तो गए हो यहाँ पे आरवीजी में, हैं? अभी हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि क्योंकि कुछ हमारी ट्रेडिशन, ईथोस, वैल्यूज, सिस्टम्स हमारे से भी पहले वाले लोगों ने, हमारे बाद वालों ने, हमारे साथ वालों ने, in the guidance of earlier management or the current management, we have created such a scenario that वो बोलते हैं ना ट्रेडिशन कभी कभी रूल बन जाती है। तो ये ट्रेडिशन जो थी उसमें सारी चीज़ें समाहित हैं, हमारे वैल्यू सिस्टम है, हमारे कल्चर है, रिस्पेक्ट है, एंड अबव ऑल सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमको आदत पड़ गई है 60-70% रिजल्ट देखने सीए का। सुना है कभी आपके घर वालों के किसी को बोलोगे कि सीए का रिजल्ट 60% होता है तो शायद आपको सीए करने के लिए लेते नहीं थे वो लोग। जब बोले इतना फीस है, इतना 5% है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, है? लेकिन आरवीजी में अगर आप पहले का रिकॉर्ड देखो तो हमारे नेशनल एवरेज से 4 से 6 गुना रिजल्ट रहता है। तो क्यों रहता है आप लोगों की बरोबर, क्योंकि आप लोग अपनी पढ़ाई को, अपने लिविंग को एकदम आत्मसात करते हो, इंटीग्रेट दैट एनवायरमेंट स्टडी विथ योर डेली लाइफ, एंड दैट इज हाउ RVG is a distinct organization. It has a different respect and reputation in society, and I'm sure that you would continue to get that kind of environment here. But it is upon you as to how you carry that and how you take advantage of every facilities, every system, every environment which is available to you, and make sure that in these 3 years you come out very victorious. हम लोग जब राजस्थान से या दूसरी जगह से जहाँ से भी आए हैं, घर छोड़ करके बाहर आते हैं तो हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं, एंड वो ड्रीम्स को पंख लगाने का काम हम सोसाइटी के कुछ लोग मिल करके करते हैं, एंड आई एम श्योर दैट यू विल मेक श्योर दैट व्हाइल वी गिव यू द विंग्स यू फ्लाई हाई। जो 3 साल का पीरियड है आपका, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड। About the RVG functioning, my other colleagues will take you through that. I will take you about 15 to 20 minutes to tell you as to how these 3 years are very important in your life. These are the very formative years of your life. If you are conscious about carrying yourself through over these 3 years, believe me, you will find a difference, a measurable difference, a visible difference within yourself. And RVG stands for that. RVG guarantee you that you would be a chartered accountant of substance. So जो 3 साल का जो पीरियड है आपका, उसको कैसे यूज करना है? How do you use that 3 years in a right way? विधान सबकी आर्टिकल्स अभी चालू हुई होगी थोड़ी देर पहले। आपके से डमी कितने लोग हैं जो आर्टिकल शिफ्ट नहीं करते, खाली हॉस्टल में कितने आते हैं? 2-4 लोग आते हैं ऐसे। वी गिव देम द प्राइज। कौन है? ये बोले देखो अभी कमोदे ने क्या बोला कि हो रहा है। जो सबसे कम ओपी रहता है वो कौन है? Anyway, I say अगर हम लोग की कोशिश होती है कि कोई डमी हमारे यहाँ नहीं है, तो गलती से आ भी जाता है तो हम उसको समझा बुझा करके ठीक कर देते हैं कि भाई डमी होना ठीक नहीं है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। गुड, सो लेट्स बिगिन दैट 3 years जर्नी, हाउ इट इज गोइंग टू बी। भैया चलो उससे पहले आपको एक थोड़ा सा एक्चुअल वीडियो दिखा देते हैं। चलो Good times, difficult times. My question to all of you is, you want what? Good times or difficult times?
What do you want? Good times, good decision. Happiness is a good time. Love, being loved, beautiful. Success, good time. Confidence, good time. Harmonious relationships, good time. Health, good times. Now, when do you remember the God the maximum? Huh? Huh? Prayers? Faith? When you are more disciplined. When you are more humble. When you are more humble. When you put more efforts. Difficult times. When you give your best. Difficult time, you give your best. Happiness makes you lazy. Happiness makes you indisciplined. Moment all of you laugh, you disturb everybody. He is focusing. You have a tummy. Huh? You are happy about it. मैं पूछ रहा हूँ क्या है prosperity? Now when you are happy with your tummy, will you work out or what? You won't work out. So happiness makes you lazy. It makes you love, makes you pampered. Success gives you ego. Confidence makes you arrogant. When relationship is going very nicely, you take for granted. And when you are healthy, you are very casual. But when you have stomach upset, when you have loose motion, it is going on coming, going on coming. And you are thinking, ruk, 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 but no, it's going on coming, going on coming, going on coming. And you promise, in that difficult time you promise, I will eat good food. Discipline, what commitments you gave in difficult time? Difficult time. Good times. चलो इसको बाद में दिखा देंगे। So the point ये है कि ध्यान में आ गया ना सबको? Good time, difficult time. So what he's trying to say that you assume, you respond to the situation as if it is difficult, so that you would always be on your toes and you would be working hard, giving your best shot. Good. So these 3 years, you can divide into the 4 buckets. You have a training, which is, let me tell you, this training article is a very unique animal in the world. Nowhere the course of chartered accountancy gives this kind of environment while you are learning. You also study and you have this kind of structure. And I find it is the best in the world. Then the study, this is a very important part of your being as a student. Grooming, again, these 3 years are from a child, from a student, from a boy to a professional. And ethics, which are very, very integral part from what you mentioned that it is inseparable part of our. So training, this is, as I mentioned to you, it's a lifetime opportunity. You would not get this time again after passing CA, or suppose if you have done articleship, you decide, can you decide or think of doing articleship again? Even somebody pays you double the salary which you get
आपके पास इन द सीए, यू वोंट आर्टिकल से तो नहीं करोगे ना. सपोज योर मार्केट प्राइस इज से 50,000 रुपीज अ मंथ एंड कोई बोले कि 1 लाख रुपए देंगे आप 3 साल की आर्टिकल से वापस कर दो, करोगे क्या? नहीं ना. It's a lifetime opportunity. Use it in a right way. Don't waste your time. No dummy, I mentioned that. लोग डमी कर लेते कि हम लोग पढ़ाई कर लेंगे. भाई पढ़ाई करने के लिए तो बहुत सारे कोर्स थे. Because the course structure requirement is that you must learn while you are studying. School just is to walk. 3 साल की आर्टिकल से बहुत सारे हमारे लोग यहाँ टिकरा मारने वहाँ पे आ जाएंगे. वो स्कूल थोड़ा दिखा के फाइल वाइल बना कर दे. That makes sense. As Manoj mentioned to you that अगर आप 6 घंटे की जगह अगर 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे की काम करोगे तो the 3 years would be equivalent to 5-6 years of your understanding and experience. Suppose after your articles, if you go for an interview and there are 2 guys, one is who has taken articleship in a very light way, did not work much, they have both been selected. And also that CA, that person would get the higher salary. लेकिन साल में आपने क्या डाला वो इम्पोर्टेंट है. स्टमक है हमारे, स्टमक में कुछ भी आप भरोगे पेट तो बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें डाला क्या, क्वालिटेटिव कितनी चीज डाली वो इम्पोर्टेंट. तो 3 साल में आपको 5 साल के जितना लर्निंग करना है, एंड दैट इज वेयर you would differentiate with the rest of your other countries. ऑफिस में जब काम करते हो ऑल वर्क इज इम्पोर्टेंट. कुछ भी हो, फाइलिंग हो, शुरू से वहीं से सीखो. कभी पियोन नहीं आए, झाड़ू भी लगाना पड़े तो डोंट माइंड, डू दैट. टेबल पे सफाई करो, क्लीन रखो. डू एवरी सिंगल स्मॉल थिंग विच ऑफिस गोइंग यू सपोज टू डू दैट आल्सो. इट्स लर्निंग. एवरीथिंग हैज अ लर्निंग. आपको स्टेपल कैसे करना है ना, हम लोग जब आर्टिकल से करते तो स्टेपलिंग कैसे करते हैं वो भी नहीं आता. And my boss used to teach me कि इसको ऐसे पेपर को पहले ऐसे करके बराबर और फिर इसमें 3 जगह करके और फिर इसको पेपर करके वो पहले नहीं. पंचिंग कैसे करना वो भी नहीं आता. सपोज इफ यू डोंट लर्न एंड देन यू स्टार्ट ऑफिस और किसी क्लाइंट के सामने आप ऐसे ही पेपर लगाओगे ऐसे करके, सो देन हाउ इट वुड गिव यू. इसलिए हर छोटी चीज सीखने की, लर्न एवरी स्मॉल थिंग इन द ऑफिस. डेवलप पैशन. What you are doing, you should be very passionate about it. अगर आप में पैशन होगा ना तो आपकी लर्निंग की स्पीड मल्टीप्लाई होगी. अगर हॉबी और पैशन को लर्निंग के साथ में मिक्स कर दिया जाए तो आउटकम्स को आता है. राइट. तो यू डेवलप दैट. ये आपने सीए किया, जबरदस्ती घर वालों ने भेज दिया ऐसे कि सस्ता कोर्स इसलिए कर लेते हैं, टिकटें मारने से कर लेता, आरवीजी में जगह जल्दी से कर लेता. नो, डोंट प्ले विथ योर करियर. अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो छोड़ के दूसरा कर लो. डेवलप दैट पैशन एंड हॉबी. बी ब्रांड एम्बेसडर. यू आर नाउ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट, यू आर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस प्रोफेशन. आप कहीं भी जाओगे ये सीए स्टूडेंट है ऐसा बोलेंगे ना लोग, तो सीए स्टूडेंट का आपसे ही आपके कंधे पे जिम्मेदारी है. आप कौन से ऑफिस से हो, या फलानी ऑफिस का आदमी है, ये वाला ब्रांड एम्बेसडर. आप कहाँ से हो, आरवीजी से, ये आपकी ब्रांड. आप किस फैमिली से, कौन से गांव से आए हो. पहले हमारे ज़माने में था कि भाई ये लोग फलानी जगह से आते हैं तो इनका थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होता है, यहाँ के होते हैं तो यहाँ का बिहेवियर होता है. क्यों बना हुआ है? इसलिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट हो तो यू आर द फ्लैग बेarer of this profession, of this institution, of the office, of the family, and most importantly of this country. When you go outside India, you will be carrying the flag of India. Nobody would know that आप गिरवाड़ा के छोटे से गांव से आए हो, राइट, और आप आरवीजी में पढ़े तो बोलेंगे इंडियन. कोई जरा बोलेगा तो भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन से इंडियन. जो कोई बम्बई का आदमी होगा यहाँ से क्या होगा बोले यार आरवीजी से. So you are carrying the flag of the organization, of the profession to which you belong to and the family. So
be careful about that. Don't do anything which tarnishes the image of this profession or this institution or the family. जब आप पढ़ रहे होते हो तो जब आप when you are working on the client's work, gain industry knowledge. Not working hard. हो रहा है कैसे हो रहा है? See, you have to have understanding of the work which you are doing. आप किसी फूड कंपनी पे जा रहे हो, किसी रेस्टोरेंट के इवेंट पे जा रहे हो, you must know the restaurant business as a whole. How the competition is, which are the formats, how the international scenario is. All those things you have to be aware. आजकल तो ऐसे गूगल में बैठे हैं आपके पास में, दबाओ उसको सब कुछ मिल जाता है, right? So, but only thing you have to information बहुत है, उसको knowledge में convert करना important. हमारे ज़माने में इंफॉर्मेशन भी नहीं थी, तो नॉलेज भी कम होता था. तुम लोगों के पास में इंफॉर्मेशन खूब है, अब उसको नॉलेज में कन्वर्ट करने का काम हमारी एबिलिटी पे डिपेंड करेगा. रिस्पेक्ट सीनियर्स, ऑलवेज. गुरुज, ऑफिस बॉयज, हमारे हॉस्टल के सारे लोग जो आपकी सेवा में, जो आपके वेलफेयर के लिए यहाँ है, भले वो किसी भी लेवल पे है, डोंट आर्ग्यू विद देम. Don't show you are from a large family, you are from your father is a chartered accountant and a very famous chartered accountant in Kota. Don't say that. They are people here. They are performing their duties. Respect them. And connected to that, zero arrogance. No arrogance. Arrogance जिस दिन आ गया ना, learning बंद. Ego और arrogance एक ऐसे friend हैं आपके, जिनको ज़्यादा नजदीक जाओगे तो आपकी ग्रोथ, लर्निंग सब रुक जाएगी. सो कीप इट अवे हाउएवर हुमसोवर यू आर. कोई आईएएस का भी बच्चा अगर है, आईएएस तो पिताजी हैं, आपका क्या उसका? आपका क्या योगदान है भाई? आपके पिताजी आईएएस हैं, आपका क्या योगदान है उसमें? है कुछ? तो उसको वहीं छोड़ दो. यू आर स्टूडेंट, आरवीजी के स्टूडेंट हो, फलानी फॉर्म के आर्टिकल हो, बस कितना ही है. बिहेव लाइक दैट, नॉट बियॉन्ड. स्टडी. जितने भी हमारे यहाँ से पास आउट्स हैं, जो मेरिटियस स्टूडेंट हैं, जिनके रैंक्स आई है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सबका एक ही कहना है. The one point is common, that perseverance and continuity is the key. अगर आप रेगुलर पढ़ाई करोगे, जैसे हमारे यहाँ महाराज आपके लिए रोज सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना बनाता है और आप रोज खाते हो, रोज नित्यक्रम आप करते हो, ऐसे ही पढ़ाई आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट. अगर आपने 2-3-4 घंटा पढ़ाई करनी है तो करनी है. एक पासबुक डाल दो, रोज उसमें 3 घंटा जमा करना है. जिस दिन नहीं हुआ तो क्या करते हैं, 1 महीने की किस्त किसी ने जमा नहीं कराई, बैंक से लोन लिया था, 1 महीने की किस्त जमा कर नहीं कराई तो क्या करते हैं, दूसरे महीने में डबल करा देते हैं. बस आज फ्रेंड्स के बर्थडे में गए थे, शाम को पढ़ाई नहीं कर पाए, दूसरे दिन सेकंड डे. सिंपल फॉर्मूला है. अब इसके लिए कोई चाहिए कुछ? वेरी इजी अर्थमेटिक ना, कर सकते हो ना, बिल्कुल. बर्थडे में जाना ही पड़ेगा, लेकिन दूसरे दिन पे करना पड़ेगा. रेफरेंस बुक्स, use as many as reference books of the domestic authors or the international authors. Use as many as, create an alternative thought process. As you read more, as you refer more books, you would have, more, alternative thought process, and that will give you a ground to engage with someone on discussion on any subject in a meaningful manner, not pure argument, but in a meaningful, because you have substance. You have studied books, and therefore you know that. RVG provides good platform for discussion. We are creating a 12th floor on the new building, which is completely for that purpose. Use as much as that for 50 months when we ready. But now also we have the good, arrangement. So discuss among yourself as much as you can. Live with that, solution. आप problem को साथ में discuss करोगे, and अगर if you 5-7 minds work together, you will find a fantastic solution to that, and that would be like, you will never forget that. Make notes, regular notes बनाना चालू करो, because exam के time में time कम मिलता है. Refer that. Relate to practical aspect. टमाटर का रंग लाल होता है. Suppose अपना आपने लाल रंग नहीं मालूम था, लाल रंग कभी देखा ही नहीं, और किसी ने बोला टमाटर का रंग लाल होता है, कैसे आप relate करोगे?
लेकिन चूंकि आपको मालूम है टमाटर लाल रंग ऐसा होता है, इसलिए यू कैन विजुअलाइज कि टोमेटो लाल है। इसलिए व्हेन यू वर्क इन ऑफिस, you every situation you relate to the practical aspects, see through the practical lenses, and that you don't have to then memorize it, it's learned, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। अटेंड लेक्चर्स एंड डिस्कशंस, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, RVG है, BCA है, WIRC है, आपके ऑफिसेज में ऐसा HR काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज करती होगी। अटेंड एज मनी एज यू कैन, इट विल एनहांस योर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। ग्रूमिंग हमारे प्रोफेशन में, बिकॉज पीपल लुक अप टू आवर एडवाइस, इसलिए आपको आर्टिकुलेट करना आना चाहिए। हाउ much knowledge you have, but if you are not able to communicate that, if you are not able to articulate that, how do you make your presence felt? How you would satisfy your client if you are not able to communicate rightly? एंड उस कम्युनिकेशन के लिए आपको प्रॉपर स्पीकिंग अगर नहीं है किसी की, आई एम श्योर आज के ज़माने के सारे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक कोर्स चलाते हैं, 15 सेशन का एक कोर्स है यहाँ पे जो मैंडेटरी है आप सबको, जिसमें ऑल दिस थिंग्स जो हम बता रहे हैं काफ़ी चीज़ें उसमें एड्रेस होती हैं। यू मस्ट अटेंड दैट। ड्रेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ड्रेस एंड एड्रेस, पहला जो आपका इंप्रेशन है वो आपके ड्रेस से होता है। मैं ड्रेस का मतलब ये नहीं बोलता हूँ कि कोई बहुत महंगे कपड़े, माने कि आप कोई शर्ट खरीद के लाओ 8,000 रुपये, जरूरी नहीं, बट व्हाट यू वेयर शुड बी लाइट, गुड ड्रेसिंग, अच्छे आप दिखने चाहिए। बिकॉज सबसे पहले तो एनकाउंटर आपकी फिजिकल प्रेजेंस होती है, उसके बाद में इंटेलेक्चुअल प्रेजेंस होगी। पर अगर फिजिकल प्रेजेंस में आपने मार खा दी तो फिर इंटेलेक्चुअल प्रेजेंस का तो आपका मौका ही नहीं मिलेगा। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर और सबके लैपटॉप है, सबके पास में ऑल यू हैव, कोई ऐसा भी है जिसके पास नहीं है तो सोचता है कि बिना लैपटॉप के काम चल जाएगा अपना, है कोई? सबके पास में है, वेरी गुड। एक जमाना होता था 5 साल पहले, नॉट वेरी गुड, तो हमारे स्टूडेंट्स को हम पूछते थे कि लैपटॉप कितने के पास में है, बोलते सर ये है, इसे काम चला लेंगे, और बहुत लोगों के पास ये भी नहीं होता था, सर कोई जरूरत नहीं है। बट आई थिंक इन दिस वर्ल्ड वेयर द इंटरनेट इज सो पावरफुल, द इंफॉर्मेशन इज सो मच available and also needed, you need to have this laptop of your own. Read, industry, finance, banking, HR, administration, technology. Read newspapers as much as, because this 3 साल में ना गागर में सागर बनने वाली बात है। जितना आप अंदर डाल लोगे अच्छी चीजें, इसमें 2 चीजें, खराब डालोगे तो खराब आउटकम आएगा, इनपुट आउटपुट जो आप डालोगे वो आने वाला है, राइट? तो जो अच्छी चीजें डालोगे तो अच्छी चीजें निकल कर बना रहेगी। एंड आई थिंक दैट्स द ऑब्जेक्टिव। किसी का ऐसा ऑब्जेक्टिव है क्या कि यहाँ करके मस्ती करके निकल जाएंगे 3 साल के बाद में? अगर है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो पैसे वालों के बच्चे आते हैं या जिनको एक डिग्री लेकर के चले, शादी वादी हो जाएगी, नाम में कुछ कर लेंगे, ऐसा है किसी का ऑब्जेक्टिव? नहीं है तो अभी वो बता सकते हो, क्योंकि हम उसको फिर गाइड कर देंगे। है किसी का? नहीं, किसी का नहीं है ना? सीरियसली पढ़ने के लिए आए सब लोग, वेरी गुड। इन्वेस्ट इन बुक्स, सॉरी, एंड हाँ, किताबों में आप बाकी चीजों पे एक टाइम भले खाना बाहर रेस्टोरेंट में कम खा लेना, लेकिन इन्वेस्ट इन बुक्स, बुक्स से बढ़िया कोई फ्रेंड नहीं होता है। जितनी बुक्स, एंड बुक्स का एक ब्यूटी क्या है, कितने लोग आप इस बैच में 70-80 बच्चे बात, एक बुक से 80 बुक पढ़ सकते हो आप, यू नो दैट? सिर्फ एक बुक से, एक ड्रेस से आप 80 ड्रेस नहीं खरीद सकते हो, नहीं पहन सकते हो। एक रोटी से आप 80 रोटी नहीं खा सकते हो, लेकिन एक बुक से आप 80 बुक पढ़ सकते हो। Isn't it? So you should form groups, buy one book each, but on the different subjects of different authors, and then make that sure that you exchange and keep reading. 500, 700, 1000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे, just imagine, इससे बढ़िया और इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लायर इफेक्ट का मिलेगा। थिंक बिग, बड़ा सोचो। सोचने के लिए मुझे बताया गया कोई GST भी नहीं। थिंक बिग, जो आदमी जैसा सोचता है वो फिर वैसे ही करने लग जाता है, और जो सोचता है सिंसियरली उसमें एफर्ट्स डालता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो एल्केमिस्ट का जो लॉ है,
It says that the entire universe comes to your support. They push you towards your goal. So बड़ा सोचोगे तो बड़ा डेफिनेटली होगा. Be creative. Solution orientation होना चाहिए तुम लोगों को. आप उठ के आगे आरवीजी में समाज के पास में आज ये प्रॉब्लम है, कल ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो आएगी भाई. सोल्यूशन क्या है? हम लोग गए एक रूम में, बाजू वाले की बेड पे कपड़े बिखरे पड़े थे ऐसे ही, तो मेरा नहीं है, तो भाई ये तेरा नहीं है, रूम किसका है? तो रूम तो हमारा ही है. तो ये कपड़े अगर पड़े हैं या तो तू ठीक कर दे, या तेरे फ्रेंड को बोल कि भाई इसको ठीक कर. तुम आकर के नीचे बोलोगे या हम तुमको बोलेंगे तो उससे फायदा क्या है? फाइंड सोल्यूशन, बी कोऑपरेटिव, हेल्प ईच अदर. प्रॉब्लम के साथ में जो आदमी प्रॉब्लम लेके आना चाहता है ना, उसका ओरिएंटेशन नेगेटिव हो जाता है. एंड हमारे प्रोफेशन में ग्रोथ तभी होती है जब आपका, और मेरे प्रोफेशन में क्यों, हर प्रोफेशन में, हर बिजनेस में आप ग्रोथ तभी कर पाते हो जब आपकी सोल्यूशन ओरिएंटेशन अप्रोच हो. प्रॉब्लम तो सब जगह कहाँ नहीं है, बट आपकी अप्रोच सपोर्ट योर जूनियर्स. हम लोग थे ना, तो हमारे से जो एक बैच ऊपर सीनियर वालों को भी वो हमारी इतनी हेल्प करते थे, हम उनको भाईजी बोला करते थे. राजस्थान में अपन भाईजी बड़े को बोलते हैं, तो एक बैच के सीनियर को भी हम लोग भाईजी बोला करते थे, क्योंकि दे वर सो मच केयरफुल टू. कुछ लोग थे हमारे में जो आम की सीजन चालू होते थे, तो वो हम 3 लोग थे, तो वो हमारे लिए भी छोटे भाई शॉर्ट में तो 3 आम खरीद के ले आते हैं, जो उनके शायद पॉकेट से खर्चे का 1 महीने का बजट होगा. So be supportive to your juniors, and that camaraderie that comes, it would be lifelong. Network well. यहाँ का जो प्रोफेशन का हमारा ब्यूटी है ना, as much as you are network. RVG में रहने से आप 2000 बच्चों से नेटवर्क कर सकते हो 3 साल के पीरियड में, क्योंकि आपके बाद में 5 बैच के हो रहेंगे और आपके पहले 5 बैच के बच्चे रहेंगे. So you can network. Just see the power of that networking. It helps. In our profession, networking is very, very important. Balance your work, study and entertainment. हर चीज का एक टाइमलाइन होना चाहिए. जैसे हम खाने के लिए एक अपना देखते हैं ना मेन्यू में कि क्या क्या चीजें बैलेंस करके खाना है, ऐसे ही पूरी लाइफ को आपको बैलेंस, वर्क, स्टडी और एंटरटेनमेंट पूरे में बैलेंस होना चाहिए. जिसमें बैलेंस बिगड़ गया, तो जैसे नमक में आप सब्जी में नमक ज़्यादा डाल दिया, तो डिस्पाइट अदर इंग्रेडिएंट्स बढ़िया है, लेकिन वो सब्जी में नहीं खा पाओगे. ऐसा ही है, इफ यू डोंट बैलेंस, योर आउटकम ऑफ द 3 years may not be appropriate. क्वालिटी फूड, हर चीज में क्वालिटी फूड, क्वालिटी वर्क, क्वालिटी एंटरटेनमेंट, क्वालिटी बुक्स, क्वालिटी मैगजीन्स. फोकस ऑन क्वालिटी. आप कहीं भी गए, अब वहाँ बुफे लगा हुआ है बहुत सारा बड़ा था, तो कुछ भी खा लोगे, यू चूज ना. यहाँ भी इस वर्ल्ड में, इस इकोसिस्टम में, बम्बई जैसे महानगर में, यहाँ पे जो पास में है फिल्मी नगरी है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं यहाँ. कुछ भी थोड़ी उठा लोगे आप, कुछ भी थोड़ी चूज कर लोगे. सो यू विल हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव, एंड टू बी दैट सिलेक्टिव यू हैव टू बी एनालिटिकल, यू हैव टू बी माइंडफुल, राइट, कि मुझे क्या सिलेक्ट करना है. पार्टिसिपेट इन द आरवीजी फंक्शंस. आरवीजी बहुत सारे, वी ट्राई टू गिव यू द कॉलेज एनवायरनमेंट, यू आर मिसिंग द कॉलेज एनवायरनमेंट, क्योंकि 12वीं के बाद में आप लोग यहाँ आ रहे हो, तो कॉलेज की लाइफ आपने देखी नहीं है. But RVG's endeavor is to give you the college environment. We have so many functions and activities which gives you feeling of a college. एक RVG फेस्ट होता है हमारे यहाँ 3 दिन लोग, इसमें 70-80 तरह के इवेंट्स होते हैं. It's a मेला kind of things, like कॉलेजेस में फेस्टिवल्स होते हैं, ऐसे फेस्टिवल. उसके अलावा बहुत सारे इवेंट्स होते हैं. हमारी एलुमनाई उसमें हेल्प करती है, हमारे स्टूडेंट्स कमेटी उसमें हेल्प करती है, हम लोग बाहर के लोगों को भी उसमें, दूसरे होटल्स के भी लोग आते हैं. So it's a very, very, very well structured, environment in RVG. And last and final, ethics. This is the most integral part. You can't detach yourself with this part. You have to have certain principles. You have to have ethics. You must have the, अगर किसी ने बोल दिया कि ये बात है कि मैं तुमको बता रहा हूँ, किसी को नहीं बोलना ना, बस हो गया बात, उससे आगे कुछ नहीं हो. किसने बोल दिया बोलना नहीं, खत्म करो. Because you will be dealing in your life
कई बार किसी फैमिली में डिस्प्यूट होता है, you would be dealing with a family, both will, all the constituents of the family would trust you. Now you can't create a situation कि आप इसके बाद उसको उसके बाद, you have to be very trustworthy. What you are doing, you have to be trustworthy. What you are attesting, you have to make sure that what you are signing is right. जर्नी लंबी है, कभी डिफिकल्टी आए, गिव ए पॉज, थिंक, वॉक एंड देन रन. यू विल रीच योर डेस्टिनेशन. लव योर कंट्री. जैसा मैंने बताया कि जो आदमी अगर अपनी कंट्री को, अपनी मातृभूमि को अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है तो उसका भी रिस्पेक्ट नहीं होगा. सो ऑलवेज स्टैंड फॉर योर कंट्री. Respect laws of land. Very very important, because अगर आप अब हमारे यहाँ तो आपने कोड ऑफ एथिक्स भी पढ़ा नहीं होगा. कोड ऑफ एथिक्स में है, अगर आपने किसी को धोखा दिया, डिसीव किया, अगर आपने किसी लॉ को नहीं माना तो इट अमाउंट्स टू कोड ऑफ वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स एंड यू कैन बी डिबार्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट. फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे लिखा RVG की कुछ गलत चीज लिखी, दिस इज नॉट फैक्ट, और अगर आपने उस पर एक्शन लिया जाता है, इंस्टीट्यूट को लिखा जाता है कि आपने गलत चीज लिखी है, दिस अमाउंट्स टू मिसकंडक्ट एंड यू वुड नो लॉन्गर बी ए स्टूडेंट. यू नो दैट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. डेवलप सिविक सेंस. कैसे मूव करना है, कौन से टाइम में क्या पहनना है, क्या बोलना है, कैसे एटिकेट्स होना है, ये ऑल दोज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. एंड जो कमल जी ने बोला है, शुरू में बोला था, मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स. एंड इन्होंने एक बात और अच्छी बोली, बी ऑनेस्ट टू अदर्स आर नॉट, बिकॉज व्हाट यू हैव इज योर्स. दिस इज व्हाट आई वुड से, एंड आई एम श्योर दैट you would have a very meaningful and very rewarding life in RVG. 3 years of your making a chartered accountant from a student, I am sure that you would live in the right way and help us in helping you further. All the very best and thank you very much. Thank you, Sunil sir. Thank you, Yagnik ji, Manoj sir, Vinod ji, and Kamal sir. Honestly, friends, the presence of Yagnik sir and the committee members, the president, the secretary of the institution, the staff members of the institution, is not only motivating, but the knowledge shared by them is equally encouraging. Orientation, induction, it's a regular practice at RVG. It happens twice a year. For most of us, it's just like a routine. For students, it's like a routine practice. But it is an event which is a learning event for both the parties, not only you, for us as well. आप तो यहाँ से सीखते ही हो, हमें भी बहुत कुछ सीखने मिलता है. The learning is at 2 stages. One between us, because every time one of us has a new story to share, new knowledge to share. Plus, for us, it is also something that we realize every batch is different. हर बैच अलग है. We need to service, we need to handle every batch in a different manner. So that is one learning that we take from every orientation, every induction session. If you would have realized, during the session, most of us emphasized on certain areas, and the most common area was putting in efforts. हम में से हर एक ने आपसे ये कहा कि consistent efforts करिए, छोटे छोटे efforts करिए. Don't just give up. Keep giving your best. Every day is different, and that is something which we need to ensure we follow it diligently on a regular basis. This also reminds me of something which I had read, a very simple mathematical calculation जो आप सभी को पता होगा मैथ्स में. 1 raised to the power of 365, उसका आंसर क्या होगा? 1. Why? Because you are putting in, like you are multiplying 1 by 365. But 1.01, 1.01 raised to 365, उसका आंसर क्या होगा? 37 point something, precisely 38.
So what we are trying to tell is एक ही चीज आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 365 डेज तक आंसर आपका 1 ही आ रहा है, बट 1.01 into 365 is almost 38 times the answer. सिर्फ 0.01 अगर आप एफर्ट एक्स्ट्रा डालते हो 38 टाइम्स जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है. तो वी ऑल कैन अंडरस्टैंड कि हम जो हमारे डेली लाइफ में जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं विद दिस मल्टीप्लायर इफेक्ट, राइट? So not taking much of your time, I would like to now have somebody who is one of us, like one of you, a student of RVG who has lived RVG, who has experienced RVG, still a part of RVG, who can be your buddy, who can be your guide, who can be your mentor, to take this session forward along with our staff members to help you understand the journey at RVG, the life at RVG, the rules and regulations of RVG, the protocols of RVG, and a lot more. So now I would like to have one of our students, Dinesh Gattani, to take this session forward. You will find a wonderful person in it. From time to time, you will be having orientation programs also. Along with this, induction के साथ साथ orientation होता रहेगा. So that we teach me refresh. Thank you very much. How are you? Take them to the meetings. बहुत ज्यादा आ जाएगी, आ रही है ना आवाज सबको? आ जाएगी ना, आपको चलेगा? आरवीजी के बारे में इंडक्शन मेनली होता है आरवीजी के बारे में बताने के लिए, लेकिन आरवीजी में 1 महीने से रह रहे हो सब लगभग, आरवीजी के बारे में पता है. तो मैं पहले सोच रहा था ईओसी के बारे में कुछ बताने से पहले. ईओसी में कौन कौन है? भाई तुम्हारा दुख तुमसे ज्यादा कोई नहीं समझता. 4 महीने से. 4 महीने से कैसे झेल रहा है? चलेगा ना मैम? इसीलिए मैं देख रहा था कि ये लोग चले जाएंगे, नहीं मैं बोल नहीं पाऊंगा. वो चलेगा, वो मैनेजेबल है, वो मेरे हाथ में. एंड कर भाई, एंड करते हैं. ठीक है भाई, चलो ऊपर से मुझे बात अरे मेरे को ऊपर से बंद करके आना पड़ेगा. दोनों कर देते हैं. अरे मेरे को ऊपर से बंद करके आना पड़ेगा. कोई बात नहीं, यहाँ से तो काटूं.